प्यार के साइड इफेक्ट वैसे होते हैं? तुम्हें मुझे रुलाने आया उससे। नहीं त्रिशा नहीं। शौर्य एक ऐसी मूवी है जो मुझे लगता है अपने रिलीज के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो जो वो एंड का कोर्ट सीन रूम है, इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले। आई थिंक हेट्रेड एंड वायलेंस इज वेरी अट्रैक्टिव इन सिनेमा। एक क्रिकेटर है एबी डिविलियर्स, वो फुल टाइम क्रिकेट खेलते थे, पार्ट टाइम उनके बहुत सारे और टैलेंट आया करते थे। जब मैं राहुल बोस के बारे में पढ़ रहा था, आई रियलाइज कि बॉक्सिंग में भी आपको शायद मेडल मिला है जी, वो तो वेस्टर्न इंडिया में सिल्वर मेडल मिला। एंड फिर पटौदी साहब के साथ क्रिकेट भी आपने खेला जी। और एक्टिंग तो 94 से लेकर 2024 तक चली रही। सो ये इतने मल्टीपल टैलेंट्स थे या हर जगह आप ट्राई करते जा रहे हैं? वॉच क्रिकेट? उफ, Who's your favorite cricketer? विराट, जसप्रीत, रोहित, anybody. What do you love about Virat or Rohit or Jasprit? What's not to love? by What is love? It's a feeling that you feel within you that makes everything worthwhile. आपने शादी क्यों नहीं की? I can show you people who are so happy after marriage and some people who are so unhappy after marriage. It's like eating something. What does marriage have to do with it? राहुल बोस ने केले का बिल डाल दिया और एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई। अभी भी आप मानते हो कि वो स्टैंड सही था? So that was the biggest error I made is to be on social media. I'll never do it again. प्रियंका चोपड़ा, Talent and hard work together. मलिका शेरावत, She was incredibly hardworking. how you see OTT? OTT is great, but has it changed the ratio of bad, average and good product? No. दिल धड़कने दो। जी उसमें एक सीन है आपका फरहान अख्तर के साथ। जी। देखो ना, हमारी फैमिली में किसी ने काम नहीं किया, हमने इसे अलाउ किया। मेरे डैड की जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया, नेवर। फिर मैंने आयशा को अलाउ किया, बिजनेस चला। For me to do that scene with Farhan was the toughest thing for me, for Rahul Bose to do. हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे, बस उन चेहरों को समझना है तो चेहरों की किताबों के पन्नों को पलट कर देखो। ये जो शेर है ये आज मेरे मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि बहुरंगी प्रतिभा के वो धनी है। कोई उन्हें एक्टर कहता है, कोई डायरेक्टर कहता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर कहता है, रग्बी प्लेयर भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं। दी राहुल बोस, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? Good, thank you. एक अरसा हो गया आपको बॉलीवुड में, काफ़ी टाइम से हम आपको देख नहीं रहे थे। अभी फाइनली एक फिल्म आ रही है बर्लिन, मैंने आपको देखा तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में गई। मेरे कॉलेज की मेमोरीज, एक मूवी के मेनन सर के साथ आई थी वहाँ पर। सो इतना लंबा समय गुजारने के बाद बीइंग एक्सीडेंटल एक्टर, क्योंकि यू स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स, हाउ डज इट फील? No, वो गलत है. I was not an accidental actor. My sporting career और जो मेरे जो acting career है, मैंने acting पहले शुरू किया था, वो तो स्कूल में था. 6 years old. या और रग्बी शुरू हुआ जब मैं 15 साल का था, तो रग्बी हैपन लेटर। और जब मैं 11 साल जो मैं इंडिया के लिए खेला 1998 से 2009, वही 11 साल मेरे सबसे बिजी और सक्सेसफुल साल थे एज एन एक्टर इन द लीड रोल in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। चाहे वो मिस्टर मिसेस आयर हो, एवरीबडी सेज आई एम फाइन, चमेली, झनकार बीट्स, शौर्य, प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, उसी पीरियड में मैंने सारे ये फिल्म्स किए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर एट ऑल। आई हैव बिन एक्टिंग इन स्कूल, कॉलेज, द प्रोफेशनल बॉम्बे स्टेज एंड देन इनटू सिनेमा। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है, हालांकि वहाँ पे स्ट्रगल का एक दिन भी नहीं था, लेकिन ट्रेजेक्ट्री हैज़ बिन वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी डिज़ाइंड, सो इट्स नॉट एक्सीडेंटल। On the contrary, the trajectory of playing rugby for India was definitely accidental, क्योंकि हम क्लब के लिए खेला करते थे और उस वक्त भारत को ऑफिशियल रग्बी प्लेइंग नेशन का स्टेटस नहीं दिया गया था। तो उनको भारत को ऑफिशियल रग्बी प्लेइंग टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस दिया गया 1998 में, जब मैं काफ़ी मतलब एज अ प्लेयर आई वाज क्वाइट ओल्ड, आई वाज 31। तो उस वक्त जब इंडिया टीम बना उसमें मैं शामिल हुआ, लेकिन मैंने कभी रग्बी खेलना शुरू नहीं किया था इस मकसद के साथ कि एक दिन मैं देश के लिए खेलूँगा, क्योंकि देश का कोई टीम था ही नहीं। सो इन फैक्ट प्लेइंग रग्बी फॉर द नेशन was accidental, a fortunate accident, but film was the opposite. I took an interview of साइना नेहवाल अभी रिसेंटली, और साइना ने मुझसे एक बात कही कि
हमें सोचना चाहिए कि इंडिया इतने सारे मेडल्स क्यों नहीं लाती है ओलंपिक्स में। उसका रीज़न है कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। टैलेंट बहुत सारा इंडिया में है, बट वो टैलेंट पुश नहीं हो पाता क्योंकि एक टाइम के बाद वो क्विट कर देता है। मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था कहीं पर रग्बी को लेकर कि पैसे कम होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। डू यू बिलीव कि अभी कंडीशंस बदली है या वैसी ही ऑलमोस्ट है जिस वजह से आपने इसे छोड़ा था? नहीं, मैंने रग्बी छोड़ा नहीं इसलिए कि फैसिलिटीज़ नहीं थे या आई वॉज 42 ईयर्स ओल्ड, मैंने रिटायर किया। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है। एक कि बुनियादी तौर से बहुत से वजह हैं दैट मेक अ नेशन अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन। It's a very, very complex, multi-layered answer that we don't have time for in this interview. But after having been the president of the Indian Rugby Federation for 3 years, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 8-10 साल में जो खेलकूद के लिए हुआ है इस देश में, वो उसके पहले नहीं हुआ था। ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर से, ना ही फंडिंग के तरफ से, और ना ही प्रोत्साहन for all the various other, whether it's sports science, whether it's physiotherapy, psychologists. So the recognition that sport requires experts from the get-go in every sport, that recognition and putting in systems in place for that recognition to be translated into फैसिलिटेटिंग, ये हुआ है पिछले 8-10 साल में डेफिनेटली। ओके, बॉलीवुड में भी बड़ा चेंज आया ओटीटी का, जो कोविड के बाद से स्पेशली काफ़ी पीक पर गया। अब ओटीटी को देखने का कई लोगों का कई नज़रिया, एक नज़रिया आता है कि ओटीटी ने बहुत सारे एक्टर्स जो गुमनाम हो रहे थे उनको दोबारा से एक चांस दिया, अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का बहुत सारे लोगों को मौका मिला, ट्रेडिशनल जो डांस और बेसिक फिल्में बनती थी उनसे हटकर कुछ करने का मौका मिला। एक वर्जन आता है डेविड धवन साहब का कि ओटीटी इज अ सेफ प्लेटफॉर्म। हाउ यू सी ओटीटी, क्योंकि आपकी फिल्म Z5 पर आ रही है। आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ ट्रूथ इन बोथ। जिंदगी में एक तरफा जनरलाइज करने में बहुत जोखिम है। ये तो सभी को पता है कि एक टेलीविज़न चैनल के बाद जब हम 100 टेलीविज़न चैनल्स पे पहुँचे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रोज़गारी, करियर ऑप्शन 10 गुना बढ़ गया था। टेक्नीशियंस के लिए, लिरिसिस्ट, राइटर्स, क्रिएटिव पीपल के लिए। अब OTT के साथ 10 गुना क्या, अब शायद 1000 गुना बढ़ गया है, क्योंकि OTT के जो चॉइसेस हैं इट्स एंडलेस, सो यू हैव टू फ्यूल द कंटेंट। तो ये बिल्कुल सही है कि OTT के आने के बाद इतने लोग अपने सपनों का एक को साकार कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, इट्स वंडरफुल। रही बात OTT सेफ या अनसेफ स्पेस जो है, I think it's more important to understand the nature of what it has done to our entertainment viewing habit. Cinema is a collective medium. You watch it in a collective. Television is a family and friends medium. You watch it with family, or you watch it with friends, or you watch it with both. 5-10 of you. OTT is a solitary medium. You watch it alone. At best, you mirror it on television, और आपने शायद एक रोज़ नहीं, महीने में एक बार आप सब इकट्ठा होकर आप देखते हो। But it is not designed to be this collective medium. With that, what Shubhankar watches, हमने तय किया था कि इससे जो हमें मिलता नहीं था, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे राइटिंग का, अच्छे एक्टिंग का, ऑफ बीट स्टोरीज़ के, जो थिएटर में कभी नहीं आ पाएंगे, ऑफ बीट एक्टर्स के साथ, वो हमें देखने को मिलेगा। सही है, लेकिन ये भी सही है कि अकेलेपन में जब शुभांकर एक प्लेन पे बैठा है, वो कुछ घटिया चीज़ें भी देखता है जो हमें नहीं पता।
जो वो कभी नहीं बताएगा किसको कि टीवी पे हम ये देखते हैं, कभी नहीं कहेगा वो. Rahul will never admit that he watches this in front of people, but quietly on television he might be watching some on OTT, on the phone he might be watching some trash. True. So both will get one will get a secret boost. All the YouTube videos that make absolutely no sense beyond the 10 seconds that they are there for, but there's a laugh which you would not watch on TV. साथ बैठ के आपने कहते हो कि 3 घंटे के लिए हम 10 सेकंड के insane videos about the unending shampoo जो भी prank है, you know what I mean, right? You don't sit into that, but now you're doing it alone. But you're also pushing for Narcos and Mirzapur, and you're also pushing for Patal Lok and all of those, right? So you're also pushing for some very, very good content. Both are true. So I think that one should chill out. OTT is great. It has increased the numbers, but has it changed the ratio of bad, average and good product? No. No. True. OTT पे कौन सी आखिरी मूवी थी जो आपको देख के मजा आया, सीरीज कोई ऐसी जो आपको लगा यार ये वर्थ थी, ये टीवी पर नहीं देख सकता था मैं, ये काम? बहुत से हैं. कोई एक है जो आपने अभी रिसेंट देखी हो? एप्पल पे बहुत से अच्छे शोज़ हैं. अभी मैंने एक शो देखा था, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, इट वाज अ मर्डर मिस्ट्री with Jake Gyllenhaal in the lead. याद नहीं आ रहा है. It was a 5-part. बहुत अच्छा मिस्ट्री था, मर्डर मिस्ट्री. या ओके. मैं आपके बारे में जब पढ़ना शुरू किया मैंने, तो आई गॉट टू नो कि आपके नाम एक बड़ा अद्भुत सा रिकॉर्ड है आपकी पहली फिल्म को लेकर. आपकी फर्स्ट फिल्म जो थी इंग्लिश अगस्त, उसे 20th सेंचुरी फॉक्स ने खरीदा था और वो पहली फिल्म थी बॉलीवुड या इंडिया से जुड़ी हुई जिससे उन्होंने खरीदा था. व्हाट वाज द स्टोरी? आई मीन ये तो डेब्यू पे आपने सीधे छक्का मारा. मैंने नहीं मारा, देव बेनेगल ने मारा. बट यू विल लीड देयर. तो आई मीन अल्टीमेटली द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर. ये भी ताज्जुब की बात है, जब भी हम एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम एक्टर को प्रेज़ करते हैं, हम कभी डायरेक्टर को प्रेज़ नहीं करते. अगर डायरेक्टर ने गलत टेक इस्तेमाल किया, आपका परफॉर्मेंस को वो बिल्कुल बेहुदा करा सकता है. जस्ट बाय चूजिंग द रॉन्ग टेक फ्रॉम शॉट टू शॉट टू शॉट टू शॉट टू शॉट दे कैन डिस्ट्रॉय योर परफॉर्मेंस. ट्रू. किया नहीं उन्होंने. लेकिन जब ख़राब परफॉर्मेंस होता है तब भी एक्टर को ब्लेम दिया जाता है. एक बंदा तो बैठा है ना बाहर जो कहता है ओके टेक. अगर वो कहता थोड़ा सा ज़्यादा करना, ये बहुत सबड्यूड है, या थोड़ा सा कम करें यार, ये इसका सुर है जो बहुत हाई पिच्ड है, द एक्टर कैन डू इट. इफ़ यूर अ डिसेंटली टैलेंटेड एक्टर यूल डू इट. तो डायरेक्टर क्या कर रहा था वहाँ बैठ के? सो आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ द क्रेडिट that should, or the debit, should go to directors. So in this case, I think that Dave Benegal should take a lot of the credit. 20th Century Fox, ऐसा नहीं था, they had come to India. They opened an office in India. I remember Sundar was in charge of 20th Century Fox. तो वो देख रहे थे, जैसे आजकल चाहे Netflix हो या Amazon हो, ये जो बाहर से आते हैं लोग, ये जो to start looking at Indian product. Similarly, they were also looking to see what is the Indian product they can have which will kind of match the 20th Century Fox feeling. तो ये अंग्रेजी में फिल्म थी. It was the second film that ever been made in English in which Annie gives it those ones was the first one, and it was a very cool hip kind of film. So it हाँ ठीक है, ये हमारे प्रोफाइल में फिट होता है. I'm just guessing, and that's how it was released. सुपर. पटौदी साहब के वहाँ पर क्रिकेट भी आपने खेला है? बहुत कम, वो 2 महीनों के लिए. उन्होंने मुझे कोच किया था एक समर के लिए, मुझे नहीं. हम 12-14 लड़के लड़कियां थी, एंड ही यूज्ड टू कम टू द बॉम्बे जिमखाना क्लब. 2 महीने के लिए ही कोच्ड अस. लेकिन जो क्वेश्चन सर इसमें आ रहा था, एक क्रिकेटर है एबी डिविलियर्स, वो फुल टाइम क्रिकेट खेलते थे, पार्ट टाइम उनके बहुत सारे और टैलेंट आया करते थे. जब मैं राहुल बोस के बारे में पढ़ रहा था, आई रियलाइज कि रग्बी आपने बता ही दिया, आप इंडिया के कैप्टन बने. नहीं, कैप्टन नहीं था. कैप्टन ओके. आप बट इनिशियली आपके नाम से फेमस हुआ वो, काफी उसकी चर्चाएं हुई, अब बाद में रिटायर्ड हुए. बॉक्सिंग में भी आपको शायद मेडल मिला है. जी, वो तो वेस्टर्न इंडिया में सिल्वर मेडल मिला. एंड फिर पटौदी साहब के साथ क्रिकेट भी आपने खेला. जी. और एक्टिंग तो 94 से लेकर 2024 तक चली रही है. नहीं, 94 में एज अ लीड आप आए थे.
Yeah, 88 shooting was in 93. Correct. सो ये इतने मल्टीपल टैलेंट्स थे या हर जगह आप ट्राई करते जा रहे थे? बचपन से एक्टिंग, स्पोर्ट्स, एक्टिंग के साथ एलिक्यूशन, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, वो सब कल्चरल एंड स्पोर्ट्स दोनों में मैंने बहुत से प्राइजेस मिले, वो सब वो तो बचपन में का जो सपना था, दोनों रास्ते जो है मैंने छोड़ा नहीं। और कुछ मैंने ट्राई नहीं किया। बाकी जो मैंने एनजीओज, 2 एनजीओज मेरे हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन एज ए चाइल्ड व्हाट आई लव्ड एंड व्हाट आई वाज बेस्ट एट आई एम स्टिल डूइंग टुडे। तो ये मल्टीपल गेम्स में कैसे से आमतौर पर क्या होता है अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो? आई रिप्रेजेंटेड स्कूल इन 11 स्पोर्ट्स। या सो हाउ यूज्ड टू मैनेज? आई मीन आप होता ना कि आप एक चीज से मास्टर करते हो। I was a master in all those sports. I was representing school. I was great. But that is school. ओके और ये जो क्रिकेट था ये तो स्कूल की बात ही कहानी शायद होगी। नहीं, school में Again school. I was in my school team and then I began to play for the Bombay Gymkhana club. Okay. And I played for the A team at the age of 13. सुपर। And then after that I stopped growing taller and I used to open the bowling for school. ओके फास्ट बॉलर? फास्ट बॉलर। Open the bowling and I'm a left-hander. So left arm fast. Then I stopped growing taller. उस वक्त इत्तेफाक से रग्बी वॉज टॉट इन माई स्कूल। 14-15 साल की उम्र पे जब मुझे लग रहा था कि यार ये नहीं होगा, आई एम नॉट 5'8" और 5'9" और 5'10", ताकि आई रीच 6 बाय द टाइम आई एम 18, वो तो होगा नहीं। एंड देन रग्बी वॉज टॉट इन स्कूल एंड आई से चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो 3 वजह थी जो मुझे रग्बी बहुत अच्छा लगा। एक तो लीगली यू कुड गेट डर्टी, नहीं तो मार पड़ती थी घर में। सुपर सुपर। सो लीगली यू कुड गेट डर्टी, सुपर। इलीगली यू कुड बी अग्रेसिव। क्रिकेट में कभी देखा नहीं था, लीगली मारधार था उसमें एंड इट वाज एनकरेज्ड, नॉट आउटसाइड द रूल्स yeah. बट इन द गेम। नाउ अ 15-year-old boy has only testosterone, he only has aggression, he's only upset with the world, right? He only has frustration, he just has energy. So rugby was phenomenal for that. And finally, girls love to see blood in my school. I'm not making a generalization. They love to see blood. The more I bled, the more popular I became with girls. I said, this is fantastic. So for all the wrong reasons, I started playing And that is the reason you started boxing also? Yes. कि और जितना बचा है वो यहाँ निकाल लेते हैं? Yes, it was very macho. But of course, there is a beauty in boxing. But rugby had a much greater beauty, which I realized. क्योंकि It seems like काफी फीमेल फैन बेस वहाँ आपका रहा है। नहीं, compared to earlier, which was negative 500,000, it became negative 400,000, basically. क्रिकेट से प्यार रहा या क्रिकेट छूट के कहीं? Love it. You still love it? You watch cricket? Oof. Who's your favorite cricketer? My God, depending on which era you look at. Okay, let's. I've been following cricket from 1975 when I watched my first test match in Chepauk. I went alone at the age of 8 with my lunchbox and a water bottle. And I sat quietly in the stands. My father dropped me outside the stadium. और उनके दोस्त थे अंदर, उन्होंने देखभाल की मेरी। एंड मैं बैठा था वहाँ पे, गुंडप्पा विश्वनाथ scored 97, we won the test match. Super. I still remember. So for me, I have many heroes. Many. I mean, look, if you haven't played sport, you will not understand that each person who plays at the highest level, Test cricket for India, is already a genius. True. We just don't realize it. Usain Bolt is a genius, but everybody on that starting line. But I think there's one favorite जो जिसको देखकर हमें एक अलग सी वाइब आती है। But we become so dismissive of the person who came 8th. He's the 8th fastest guy on earth. Okay, name few. अभी करंट जनरेशन जो हमारी चल रही है क्रिकेट टीम की। I mean, there's everybody. Like Virat, Jasprit, Rohit, anybody. what do you love about Virat or Rohit or Jasprit? What's not to love? Discipline, dedication, genius, ability, skill, tenacity. Each of Rishabh, look at them all. I mean, they're all gifted, hardworking, gutsy human beings. I mean, they would tear it apart if they came into your studio or they tried to work in some bank. They'd be phenomenal. Just look at the qualities these people have. Just to break and play for India is a different matter altogether. It's another ball game. When you cross that white line and you play for your country, you become a different human being. तो ये वर्ल्ड कप आपने भी देखा था हमारी तरह? Of course. नाखून आपके भी 30 पे 30 चाहिए था? No. Never.
Never. You were calm, cool, composed. Winning and losing is not in your hands. You can only play the best. And in a team sport, it's even more frustrating. Winning and losing is never in your hands. Nobody wants to lose. But it's not in your hands. What is in your hands is what you can execute at that moment. Okay. That's all that's in your hands. Okay. And that's a dictum of life. सुपर बर्लिन पे मैं जाऊं उससे पहले मैं शौर्य पे आऊंगा बिकॉज जी। शौर्य मुझे बर्लिन को देख के मुझे शौर्य की याद आई और शौर्य एक ऐसी मूवी है जो मुझे लगता है अपने रिलीज के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गई खासतौर पर जो वो एंड का कोर्ट सीन रूम है वो बहुत एवरी टाइम आई ओपन ट्विटर वो कहीं ना कहीं मिल जाता है राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों अपने अपने सिरे से नहीं विंग की बात नहीं है आई थिंक हेट्रेड एंड वायलेंस इज वेरी अट्रैक्टिव इन सिनेमा from Godfather, you can look at it. It's a telling tale about human beings that hatred and violence is much more gripping than peace and compassion. Have you seen a movie saying this is a peaceful, compassionate film? No. I also love watching Last Kingdom. So you know how it is. It's the gun. It's even in love there should be suicide or murder. These are the very, very entertainment-wise attractive tropes that people are attracted to. Who wants to see a film just of somebody waving a hand and saying, I'm very peaceful and loving? Where's the conflict? एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर जो वो लास्ट का कोर्ट रूम सीन है जहां पर के मेनन सर होते हैं और He did a fantastic job. मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि राहुल बोस ने वो केस जीता था और के मेनन ने वहां पर अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया था आई मीन Well, I don't think there is winning and losing in acting. I think it's very sad. नो कोर्ट रूम केस फिल्म के It's कॉन्टेक्स्ट very sad to put it like that because even KK doesn't think that way. I know KK. Nobody wins and loses in acting. It's about what you perceive as a viewer. And if you feel that, KK ने तो राहुल की धुलाई कर दी उसमें, no problem. I have no problem at all about it. Most I have to serve the scene. I have to serve. You were too good there. That's what I'm saying. I'm not justifying my performance. I'm saying as an actor, you have to serve the material. What is the material? That is just because Shubhankar is shouting right now, I don't have to shout back if that's not my role. If my role is to absorb and to be somebody, I have to stay with that. It could be that as an actor you feel insecure and you go to the director and say, "Yaar, come on, what the hell? I should also say something." He says, No. You're the voice of sanity. You're the voice of reason. You're the voice of peace. You're the voice of coexistence. That's your character. You have to play that. You play it. Then what happens with the film finally? I have to do what I have signed up to do. Then whatever emerges from the scene, and if KK's character is absolutely gripping, great. That's not for me to worry about, think about. It's not in my hand. What's in my hand is the integrity that I have to display as an actor in that role at that moment. That's it. And that's my entire career. I've never asked anybody for a close-up. I never watched the monitor. I'm here for you. You sign me on. Your vision, your dream on celluloid is my responsibility. मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से आप बहुत पीस में नजर आ रहे हो आप Completely. हाँ तो आज के टाइम में हर दूसरा इंसान इनसिक्योर है आज के टाइम में हर दूसरे इंसान के जहन में 50 चीजें चल रही है If you're prepared to lose everything in life, you will have enormous peace. ये कैसे डेवलप हुआ सर ये इनिशियली से था या आप No, you learn. You evolve. देखिए जिंदगी का जो रास्ता है वो फ्लैट नहीं होता है अगर फ्लैट है तो यू माइट एज वेल इट्स बोरिंग हर रोज़ आपको ये सोचना पड़ता है कि मकसद क्या है मकसद है हैप्पीनेस पीस कंटेंटमेंट चैन की नींद मकसद ये है वेदर इट्स पावर wealth or fame. These are the three drivers. These three drivers will never ever get you there. What will get you there is power plus, wealth plus, fame plus, which is the wisdom that comes with this. The learning that comes with this, ki yaar, what was it? It was not worth it. If your child is going to be unhappy and self-harming themselves in a corner of the bedroom while you're making millions, is that what you wanted? No, of course not. So what do you want? If I say, Shubhankar, do you want that or do you want for your child to be happy, healthy
and brave in this world and do whatever they feel like it, what will you say? So I'll say, if you want that, then you have to give up all of this and do this instead. Wipe the floor. You gave me one more question. So that happens, that idea. So if indeed peace, contentment, deep self-happiness, I can look at myself in the mirror and say, I like you. If that is it, then what will take me there? Initially, you have to make money, you have to pay your EMIs. Gradually, you say, what will take me there? And you realize that I want to move to a place where I genuinely want to feel peaceful, content, and while I receive everything in the world, I still want to have the ability to forgive. Superb. Myself first and others later. Forgive. It's okay. Tomorrow, as long as I'm getting better. And move towards the light. That should be you'll never probably ever reach there, but move towards a more compassionate, more peaceful place where finally you can just say, yeah, I'm done. You said beautiful thing about life, but फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर जिंदगी की इतनी समझ आपको है, आपने शादी क्यों नहीं की? What's the... मैंने आपके कई इंटरव्यू सुना कि 18 साल में I realized. What's the equation? What does marriage have to do with any of this? Yes. I can show you people who are so happy after marriage and some people who are so unhappy after marriage. It's like eating something. What does marriage have to do with this? The way you give example कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो? आपका बच्चा जो है, like the way you said अभी कि आप बहुत सारे पैसे कमाओ. I talked about children, I talked about marriage. Life, how does marriage alter the quality of your existence? Love does. You say love to me, I'll agree with you. You say children to me, I'll agree with you. But marriage per se, it's not a... So why you don't believe in the process of marriage? I don't mind it. But it's not a golden key. Marriage and you'll become happy. No, that's not the way, that's true. Love. But to realize at 18, love that ये you'll be समझना है happy. मुझे. 18 साल में कैसे realize हो गया? To adopt 3 children and you'll be happy. These are things that you can actually implement. Marriage, what are you going to do? There's somebody who's growing every day, changing every day. You are changing every day. What are the chances? Slim. And you'll work on it. And you'll keep compromising and you'll keep trying to make this work. But at the end of it, and I keep saying, if you can laugh together, it's a great relationship. If you can laugh together, if you can laugh at yourself and laugh together, things are good. It's looking good. Everything else, so it's not a... Why didn't you get, as if you don't get married, you can't reach a higher happiness. Please. I mean, look at it. The people across centuries in our existence as human beings, the ones who have really understood, and we've read about them, who've unlocked the deepest mysteries of life for themselves, haven't been married. It's not that you can't do it being married, but it's not a prerequisite. Beautiful. I got a line from Atal ji. Atal ji ने एक बार कहा था, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं हूँ. मैं आपकी बात को सुन के exactly वही line recall कर पा रहा हूँ. I don't know in what context. Someone asked कि आप lifetime क्यों single रहे? तो he said नहीं. मैं अविवाहित हूँ, यानी शादी नहीं हुई मेरी, but मैं कुंवारा नहीं हूँ. So I mean, each person has them. I can certainly say that. Despite not having a life partner, despite not being married, am I lonely as a human being? Of course not. You're surrounded by love. You're surrounded by What love. is love? Well, I think that it's a feeling that you feel within you that makes everything worthwhile. A love for your pet. A love for a child or a human being. I think the nature of love is such a strong emotion. It is all encompassing, and if you can actually have that, and some very great human beings have in the past, suffuse their beings with love, where they just are full of love, then I think life just takes on and it becomes transcendental. The last question about love, then I will quit this part. I was watching one of your interview जिसमें किसी ने सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया इसका, कि शायद 15 साल तक किसी के इश्क में आप भी थे.
किसी के इश्क में आप भी थे एंड देन फिर आपने कहा 11 साल हो गए, नाउ आई एम सिंगल? नो 15 साल के लिए नहीं था. I've had 3 or 4 long relationships, but the most it's gone to is 5 years. Okay. So you never felt like कि I should get settled down or Of course, you carry... of course you think about these things. Then you have to ask yourself, what does it mean? Are you doing it for yourself, or are you doing it for some approval or something? Are you doing it for the person who's your partner right now? What does it mean? It has to mean something greater. 2 plus 2 has to not be only 4. It has to mean something greater. And if you can't find that meaning, and mutually you decide you can't find that meaning, it's okay. Okay. So आपको अकेलापन कभी नहीं लगता? No, absolutely never. Absolutely never. I mean, sometimes you feel it'll be nice to, but it could be anyone, it could be you. As if I had a moment to share with, I'm not fussy who I share it with. Superb, great. बर्लिन अभी आ रही है. बर्लिन मैंने ट्रेलर देखा, बहुत खूबसूरत था. तीनों कल जो एक्टर्स थे, कमाल के एक्टर्स थे. चाहे श्वक की बात कर लीजिए, अपार की बात कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए. गुड टू सी यू बैक. स्टोरी अच्छी, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे. आमतौर पर वो टिपिकल स्टोरी नहीं थी, थोड़ा सा, क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल एंकर थोड़ी हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ी पॉलिटिक्स है. क्या इसमें खास है सर? एंड क्योंकि एक टाइम के बाद फिर हम आपको देख रहे हैं, कुछ तो सोचा आपने भी होगा. आई थिंक 2 चीज़ें हैं. एक तो अक्सर जब हम स्पाई थ्रिलर एस्पियोनाज देखते हैं, so there is a good and a bad. And basically everybody on the good side has to win, but everybody on the bad side is almost winning. James Bond is about to fall, who's going to die, but he never dies. So the good will win over the bad, and you're rooting behind Shubhankar, who is a good guy. So my support is for you. But in Berlin, there is no good and bad. एक मसला है, लेकिन उस मसले को हल करने में जो 2-3 शख्स हैं, उनमें से कौन क्या है पता नहीं चलता है. So you're wondering, who am I supporting here? Who do I support? And you begin to slowly understand कि जो वो बंदा था ऐसा नहीं है actually, और वो जो बंदा था वो actually is turning. So it is this that is very, very interesting. That what is emerging, what is the truth about these 3 people? That's one. The second thing I love about Berlin is the silences. Because the silences are on their faces and you're wondering, मतलब ये हीरो है कि विलन है, ये सोच क्या रहा है? And cinema, really good cinema, can never be heard. It has to be watched. वो ऐसा नहीं है कि आप खीरा काट रहे हो किचन में और चल रहा है. वो जो चल रहा है, it'll be some sport. True. It'll be an audio book. It'll be maybe a television series you're seeing for the 17th time. But cinema should not only be heard. This talky American kind of cinema that you see occasionally, then you can actually go and cook in the kitchen and listen to it because you don't need to see the faces. But here, cinema has to be watched. Like, नहीं, ये सही बंदा नहीं है. And it's those silences, even as an actor, not just as a viewer, that I love those silences because the director can't direct you. Shubhankar reacts. Rahul says, your mother is dead. Shubhankar reacts. What's he going to do? Be sad. What are you going to do? I want to see that. So I think it's that which is very interesting about Berlin. I love films like that. English August, my first film. So many silences. I love to play in those silences. एक बहुत अच्छा सीन था आपकी एक फिल्म याद आई मुझे, दिल धड़कने दो. जी. उसमें एक सीन है आपका फरहान अख्तर के साथ. जी. जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज वाला भी है और आपके एक्सप्रेशंस जो सेकेंड हाफ में है, वो खामोशी मुझे भी याद आई सडनली, जिसमें आप कहते हो कि टीवी वाले बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं कहाँ वुमेन की स्थिति जो ख़राब है. देखो ना, हमारी फैमिली में किसी ने काम नहीं किया, हमने इसे अलाउ किया. डू यू बिलीव इंडिया में अभी भी वुमेन की हालत वही है कि अलाउ किया? वो जो फरहान ने कहा कि एक अथॉरिटी आती है. आई वांट टू नो फ्रॉम यू. व्हाट डू यू थिंक? आई वांट टू नो फ्रॉम यू. नो, व्हाट डू यू थिंक? टेल मी. आई रेड अ स्टार्ट 15 मिनट में इंडिया में रेप केसेस होते हैं हर 15 मिनट में, वो एक कहानी. बट मुझे लगता है अब काफ़ी चीज़ें बदलने लगी हैं. अब अलाउ करने वाले से ज़्यादा देयर आर वीमेन जो अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, अच्छा कर रही हैं. काफ़ी चीज़ें बदली हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में. छोटे शहरों में भी एटलीस्ट बातें शुरू हो गई हैं. एंड द ऑपोजिट?
That's my question to you. I want to know from you. Everything you say about India, the opposite is true. We are warm, we are also cruel. We are welcoming, we can also be very unwelcoming. We are emotional, we can also be extremely hard-headed and do dirty on you. You know that, I know that. Everything you say about this country, the reverse is true because we're a massive country. And we've experienced civilizationally hundreds, if not thousands of years. So when you say that things are getting better for women, the equal argument can be made, but things are also getting worse. Initially, there were many cases. The cases of rape, dowry deaths, I've been working on gender for 2 decades, since 2002. And for me to do that scene with Farhan was the toughest thing for me, for Rahul Bose to do. मतलब मैंने कहा जोया तुम क्या कर रहे हो, जो एनजीओ राहुल बैठा है मेरे सर पे वो तो उसने खुदकुशी कर लिया अभी तक. So it's very very difficult. देखो ना हमने अलाउ किया इसे. So I had to. That was the kirdar. That was the character. But the cruelty and the barbarism and the sheer violence that is now being inflicted on women across that we see was not there in this extreme. So now you have to ask yourself, which both are true. It's okay. Absorb it. It doesn't matter. You don't have to give people a soundbite. And life lies in between. The only thing to look at, एक जो बड़ा मसला होता है society में, change happens on the outer edges of the society. It's like a magnet outside. So it will attract the first few loose particles on the fringes. Change happens on the fringes of society and slowly works itself in. Is that change happening? 100%. Does it mean that that things are better on the whole? Who knows? If you're in Mumbai, possibly. If you're in a village where patriarchy, misogyny and violence against women reigns, maybe not. So one should just slow down and relax and say, okay, first of all, tell me, what is this India talking about? Are you talking about a small village somewhere in the northeast? Or are you talking about a small village somewhere on the tip of India's peninsula? Where are you talking about? Do you know what the cultural background of these places are and what their histories are? Very difficult. How can people... I love that people say India. India as if, मैंने ऐलान कर दिया कि इंडिया में ऐसे हो रहा है. It's very complex. But I'm sure वो तो हर कंट्री में होगा सर, कि हर कंट्री में 2 हिस्से होंगे. आप मुझे बताएं कौन से कंट्री में इतना आपको heterogeneity, इतना आपको the confluence of so many cultures, so many races. आबादी भी तो हमारी बड़ी है. But look at the landmass. It's not a country. It's a culturally there are so many regions, let's call it, right? The idea of India is something that is a miracle. It's a miracle. And it's sometimes you and I sometimes think to ourselves, my God, and yet there's something that connects us. I wrote about this once. What is it that connects us? I said, तुम्हें किसी हाईवे के चौराहे पे आप जाइए, आंखें बंद कीजिए. डीजल के फ्यूम्स आपको मिलेंगे, पेशाब का आपको एक स्मेल मिलेगा, कमेंट्री कहीं पे चल रहा होगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम या हिंदी फिल्म के गाने बज रहे होंगे, कहीं पे डोसा तल रहा होगा या कहीं पे पूरी या कहीं पे भटूरा उसके भी तो and that with some dust mixed into all of this, that is, you're here. You don't know which part of this country, but this is unmistakably this landmass. Let me put it to you that way. So it's a fascinating. I was just telling my manager today. I said it's incredible in its awfulness and incredible in its beauty. I could not imagine being anywhere else. It is all the richness, as I said, of the good, bad, ugly. It's rich in all aspects. Is here, and if you really want to look at humanity and life and a life force, यहाँ पे आओ. Okay. एक और बहुत वीडियो आपका वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, जब हम टीवी में काम करते थे. राहुल बोस ने केले का बिल डाल दिया
और एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई, जिसके बाद होटल स्टाफ ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि ये चीज़ें, अभी भी आप मानते हो कि वो स्टैंड सही था? I don't want to talk about this even for a second because I have no wish to be a social media celebrity. I'd rather cut my arm off. So that was the biggest error I made is to be on social media. I'll never do it again. I have no wish to be on social media. तो वो गलती and थी? ever. The idea of putting this in front of people who don't know me or who don't know the story behind it was absolutely myopic. Why would you do that? Because you're laying yourself open to all kinds of valid comments because they don't know the history, they don't know the context. So I'm not even going to get into it because now I'll furnish the context, it'll then come out, it'll start. I'm very happy tweeting about cricket. I'm very happy talking about sport. I'm very happy, talking about Berlin. These are the things that I'm very happy to. I understand now the creature that is social media, and 9/10 of it is not for me. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट. आपका वरुण भैया आपको दिखाई पड़ते कहाँ पे? सोशल मीडिया पे, जो आप ट्विटर पे क्रिकेट के पोस्ट करते हो कभी? वरुण भैया, दैट सीन फ्रॉम चैन खुली की मैन खुली, जी. वो जो सीन आता है जिसमें आपके सामने एक बच्चा छक्के पे छक्के मारे जा रहा है, जी. एवरी टाइम व्हेन सूर्या प्लेज, विराट प्लेज और रोहित प्लेज, लोग वो मीम वायरल करते हैं. Okay, yeah, I've heard about this. एक आध बार मैंने देखा है, but I haven't seen it hundreds and hundreds of times. But yes, I have seen it. इनफैक्ट अब हमारे ऑफिस में भी हमारे स्टाफ ने भी कहना शुरू किया कि वरुण भैया आ गए. कभी कई कैरेक्टर्स आपको रियलाइज नहीं होता, बट वो बहुत लंबे समय तक चल I जाते हैं. know. Who would have thought? Such a. It's not a very major film. It's not a very great social message. ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें. And yet it has. I mean, I don't think many people remember me at all from Mr. and Mrs. Iyer or Pyaar. There's a new generation. They do remember Chain Kuli Ki Main Kuli. And I've करीबन 200 स्कूल्स में मैं गया हूँ इस देश में, और सभी स्कूल्स में, चाहे रईस से रईस इस शहर में दिल्ली में से गरीब ट्राइबल स्कूल्स में मैं गया हूँ, और मैंने पूछा कि आप में से किन ने चैन कुली की मैन कुली देखी है, और सारे के हाथ ऊपर आते हैं. ऐसे 2 बार किसने देखा है? सारे के हाथ. 3 बार किसने देखा है? सारे के हाथ. 4 बार किस देखा है? सारे के हाथ. 5 बार फिर थोड़े हाथ नीचे हो जाते हैं. It's astonishing. It's also sad that there's not enough content for kids generated in India. Where is that original content coming out for children? जबकि ये एक profitability के तौर से it's a massive industry in Hollywood. Okay, are you religious? Not at all. कभी मंदिर नहीं आते आप? Sorry? कभी मंदिर नहीं जाते आप, पूजा पाठ ऐसा कुछ? नहीं, not at all. Culturally I'm an Indian. I have gone to temples. माँ लेके जाती थी, मीनाक्षी टेम्पल, अजंता एलोरा, माउंट आबू. Seen most of India. Culturally celebrate this country, but I'm an atheist. I respect everybody. I respect everybody's right to worship a god, worship a creature, whatever. It's whatever. जैसे मैंने अनुराग कश्यप को सुना, he said I'm atheist, but अगर कोई मंदिर ले आता है तो मैं चला आता हूँ, और चलो घूम के आते हैं. हाँ, मैं कभी ना नहीं कहता. अब मैं एक रग्बी टूर्नामेंट में था, किसी जगह पे उन्होंने मुझे भगवत गीता सौंप दिया, तो दैट्स फाइन. ये आप दे रहे हैं मुझे, इट्स योर एक्सप्रेशन ऑफ लव, दैट्स फाइन. आई हैव नो प्रॉब्लम. आई मीन आई एम कंप्लीटली happy and tolerant of any that makes you happy. If you say that you worship the mic, that's your call. Why would I stop you? What pleasure would it give me to stop you on your path to happiness or to peace? When you're not harming me, you're just following your religion. मैंने राहुल बोस को कई बार बात करते देखा रिच एंड पुअर के बारे में. एक बार आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर 10 पैसे कम हो जाए तो रिच को लोग कह देते हैं कि ठीक है, पुअर से ले लेते हैं. डू यू बिलीव कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जीरो से स्टार्ट है? मतलब हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन रिच एंड पुअर का. एंड व्हाई यू टॉक सो मच अबाउट रिच एंड पुअर? I don't talk so much about it. क्योंकि मैंने आपके जितने भी वीडियोस I haven't देखे, spoken to anybody for 15 years. I've only spoken about my film for 15 years. I've stopped talking for 15 years. Look, I think that the idea of inequality of the most basic kind, clean water, अगर आपको घाव है आप किसी के पास ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो,
Those ideas are human ideas. They're not political ideas. No political leader has ever said, don't give clean water or don't give clean air or whatever it is, right? So I think those are basic human values that if I can help in some way for people to live at the very basic level with some kind of peace, I'll do anything. रही बात discrimination की, when your foot touches a book, what do you do? When your head touches a book, what do you do? Nothing, we just hold. पैर छूता है तो उसको माफी मांग लेते हैं. You feudalized your body, no? Yeah. This is not the same as this. True. But this keeps 90% of India alive. Deep, yeah. If it wasn't for this, they wouldn't be alive. Now you tell me. बट When- आमतौर पर उसका एक जो शायद कॉन्सेप्ट जो उसका शायद होगा वो सफाई से जुड़ा हुआ होगा कि कई बार आपके पैर गंदे हो जाते हैं तो आप Understood. Yeah. I understood that. But understand where, I mean, that this will be dirty and this will be whatever it is. I'm trying to make, there are some biases that you ask yourself, my God, I mean, why? So now you can ask me who started it, why did it start? I'm not even interested. All I care for is the fact that I respect you from head to toe. And of course, I respect learning. And of course, I respect knowledge. Of course. But both can coexist. True. You know? So I think that the idea of just having a sense of proportion, reason, a sense of respect should permeate everything. That's all. I mean, I respect how hard you work. You were saying you were with Aaj Tak, you're on your own, you must be massively popular. Why would I not love that? What would stop me from loving that? Nothing. Absolutely nothing. And jealousy, we can both exist. True. There's enough space in this world for everybody to exist. True. That idea is now the centrality of my thought, that I'm open, I listen and hear everything, but the decisions that finally I take as a human being are to take everyone together. Everyone. Super. We don't, and COVID taught us this. Did we learn? At least I. किसी एक को हम नहीं पीछे रख सकते हैं क्योंकि they can start the whole thing again. उसके बाद has humanity changed its way? Those lessons, do we apply it everywhere? Do we remember those lessons, or have we very quickly forgotten them because it was a bad dream? Rugby is one of the most violent outdoor sports in the world. If you try playing rugby alone on the field, you will go to hospital. You have to play with your team, otherwise आगे नहीं बढ़ पाओगे. इससे बड़ा जो बुनियादी जो सबक है उस खेल से कि अगर आगे बढ़ना है जनाब, आपको साथ में लेना पड़ेगा, लोगों को साथ में लेना पड़ेगा. Super. What a lesson. What a lesson to learn. So, you know, it's all of that as long as you keep your eyes open to and say, yeah, I'm full of gratitude to this world, but I also know that I can't do this alone. I can't do it alone. ओके ठीक ग्रेट. अगर किसी को राहुल बोस के बारे में ना पता हो करंट जनरेशन में और आपसे वो कहे कि सर आपकी कोई एक फिल्म बताइए जिसे देखकर मैं राहुल बोस को देखना चाहता हूँ, आप उसे कौन सी अपनी फिल्म रिकमेंड करोगे? None, you can't see Rahul Bose. You'll see the character. कोई भी आपके, हाँ, वो कोई भी कैरेक्टर जो आप चाहोगे यार ये वाली देखो. I mean, you know, depends on who's asking me. If a child asks me, I'll say Chain Kuli Ki Main Kuli. But otherwise, I think that I find deeply satisfying The Japanese Wife, Bulbul, certainly Berlin. I think if I was to look at certain Mr. and Mrs. Iyer, जो मैंने फिल्म बनाई पूर्णा, I think that's a wonderful movie.
maybe everybody says I'm fine also. Pyaar ke side effects, I enjoyed that very much. It's great fun. I enjoyed that very much. सुपर. प्यार के साइड इफेक्ट वैसे होते हैं? क्या पता मुझे. You said you had multiple relationships. Side effects तो पता नहीं, लेकिन love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. It's the only thing. Finally, मेरे NGO का नाम है The Foundation, और मैंने उसके नाम उसके पीछे नीचे लिखा है The foundation of everything must be love. The impulse to do something must be love. If it is something else, it won't last. ठीक है. लास्ट सेगमेंट सर. कुछ आपके कलीग्स के नाम लूंगा मैं. हम कहते हैं कि हर इंसान से हम कुछ सीख कर जाते हैं. सो मैं आपके कुछ कॉलीग्स के नाम लूंगा. इनसे आपने कुछ सीखा है. इनको अभी इनको याद कर तो क्या जहन में थॉट आता है? यू हैव टू जस्ट से इन वन लाइन. I'm not sure. Let me see. ओके. प्रियंका चोपड़ा. Oh, amazing. Talent and hard work together. My God. That woman, she knew every beat of that film. She's amazing. She's amazing. I'm telling you, I've worked with her and she's amazing. I've looked into her eyes at this and she's amazing. मलिका शेरावत. You know, I don't know her very well. I used to know her when we did Pyaar Ke Side Effects, and she was incredibly hardworking. Incredibly hardworking. Which is something, you know, no one talks about, but she at least she used to work very hard. We had a very solid time. फरहान अख्तर. I mean, Farhan is, what can I say? He's, I think, again, he's really, these are people like Priyanka. He's talented, and the kind of hard work, just to build Excel to where it is now, it doesn't happen without enormous sense of excellence, sense of pride, sense of enjoyment. He's also very funny. He's a lovely guy. He's very funny. Ishwak. Rare. He's a rare boy. He's definitely rare. He's got nobility. He's got a strong sense of ethics. He's very. He has nobility. It's a very rare quality. Apart from being talented, again, doesn't shy away from hard work. You know, when people are real, it comes. You have to work hard. You have to be humble. Not be humble. You just have to be. You have to be. I'm on your show. I'm not here to show you how great I am. I'm here to engage with you in the most honest way that I can. That's presumably why you want me here. You don't want me here because I'm paying you millions. My tribute to you is to be myself, is to be authentic. What's the point otherwise? Why are we doing this? So I think in that way, Ishwak is, he's a rare gem. आपने रॉकेट बॉयज देखी है? नहीं. आप प्लीज देखिएगा. मैंने पाताल लोक देखी है, और मैंने इशवाक को, आई डिडंट नो हिम. मैंने किसी को फ़ोन किया कि ये लड़के का नाम इशवाक सिंह है, तुम्हारे पास नंबर है? किसी ने मुझे दे दी. तो मैंने इशवाक को मैसेज किया. आई डोंट नो हिम, एंड आई हैव डन दिस थ्रू माई करियर. People I don't know, they might be very famous, I might not know them. I've just messaged them and said, listen, I saw this film. And every single person has responded. Just to say how unexpected, how wonderful, thank you. मतलब I suppose human beings don't do this without any kind of knowledge of who you are, to just say, hey, I saw this and it was great, and to say something authentic about the performance that you felt. I said it. I sent it to him. बट आप रॉकेट बॉयज जरूर देखिएगा. देखूंगा. यू विल लव दैट फिल्म. आई मीन स्ट्रॉन्ग मैसेज. एक तो इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वो खूबसूरती प्लस एक्टिंग. अगर आप एक्टिंग पॉइंट ऑफ देखोगे, आई मीन हैट्स ऑफ. जिम एंड इशवाक. सुपर. दे बोथ वेर लाइक, उससे बेहतर कास्टिंग नहीं हो सकती थी. Yeah, it's a lovely story. I've read the real life story. I know what happened. बट द वे दे डिलीवर्ड, आई मीन मजा आ गया.
First Chalo. season, second season. On the flight back to You should watch it, and you will text him and then say thanks to me. Thank you, sir. Lovely What talk. about Apar Shakti? Did you ask me Apar Shakti? Yeah, Apar Shakti. You can ask me about Apar Shakti. Might as well, since we are Superb, promoting superb, Berlin. Beautiful heart, yeah. What a beautiful heart. What a beautiful, clean. He's a sportsman also. But उसमें जो enjoyment है ना, the amount of enjoyment he gets from life, whether it's a plate of chola bhatura, whether it's a film role, वो जो रस निकालता है ना जिंदगी से, it's such a beautiful quality. And I'm working with Ayushman in a film. Both those boys, just so well brought up. Truly, I told him last day. So well brought up and so incredibly, I mean, you know, somebody you'll be proud to call your friend, someone like that, and also ridiculously talented. It's ridiculous how talented he is. I think sometimes Apar himself doesn't know it. आप अपार से गाने सुनिएगा और फिर आयुष्मान सुनिएगा. दोनों ने मेरे सामने गाना गाए हैं. मेरे को एक तरह की आवाज़ें लग रही. कल मैं उनसे अपार से पानी दा सुन रहा था. And I was like, अच्छा यार आप दोनों डबिंग कर सकते हो एक दूसरे की. No, Ayushman's voice has got a little more velvet in it. But he was too good. कुड़िए नहीं, I mean. Apar has got a little bit of a husk. Ayushman has got more velvet. One is chocolate with nuts and the other one is smooth, creamy. How beautifully defined it. But they are gem of a person. Yeah, they both. Lovely. Superb. Good to see you, sir. I hope आपकी फिल्म अच्छी जाए. बहुत सारी और फिल्म देखने को मिले. थोड़े ज़्यादा काम आप करना शुरू करें. जैसे आपने मल्टीपल काम बहुत सारे किए हैं. Well, I'm still the 6-year-old boy. I'm happy to get on to that. I'm home. I haven't moved. I'm here. Okay, समराइज करने के पहले I want कि one piece of advice जिसने आपकी लाइफ चेंज की हो. कई बार छोटी छोटी बातें जहन में रह जाती हैं और फिर जिंदगी भर याद रहती है. Who was it who told me? I'm trying to think who told me this. I forget. It might have been a rugby coach of mine. New Zealand के थे. He said, finish well. मिसाल के तौर पे आप मेरे इवेंट के लिए आ रहे हो तो मैंने आपके लिए गाड़ी भेजा एयरपोर्ट प्लैकार्ड शुभंकर मित्रा आप आए किसी ने आपको ग्रीट किया आपके साथ बैठे आपको गाड़ी में लेके गए आप होटल में आए आरती हो गई वहाँ पे टीका लग गया आप पे गार्लैंड दी गई आपको इको फ्रेंडली वुडन गार्लैंड आजकल जो भी ब्रेसलेट मिलता है आप ऊपर गए मैंने आपको फ़ोन किया शुभंकर हाउ यू डूइंग I'll see you at 5. I'll come up and say hi. We'll have a cup of tea and then we'll go down for the function together. ये सब हो गया. फंक्शन के बाद मुझे बताइए क्या मैं आपके साथ ऊपर गया एक कप चाय पीने के लिए? नहीं. क्या आपको वहाँ से फिर गाड़ी में कोई आया था? क्या वही शख्स जो आपको एयरपोर्ट से लेके गया था वो आपको वापस ले जा रहा है? नहीं. गाड़ी मिलेगी आपको, आप वापस जाओगे क्योंकि आपके साथ काम ख़त्म हो गया और आप याद करोगे कि आपको अलविदा कैसे लोगों ने किया. ग्रीटिंग नहीं. जब उनको आपकी नीड थी दे ट्रीटेड यू लाइक दिस. बट व्हेन यू डोंट नीड पीपल हाउ डू यू ट्रीट देम? Superb. I mean, that is why people love Shahrukh Khan. I don't know. Because they always say कि जिस तरह से शाहरुख आपको छोड़ कर आते हैं. When you don't need people anymore, do you treat them the same as you would needed them? That for me is finishing well. Superb. You have to finish well. You have to finish as well as you started. The last 10% takes another 100% of energy. True. But you have to finish well. And that's something that that's what I try and do always. I always try and finish. Even in my own task. To reach 90%, buffering होता है ना कंप्यूटर पे. Buffering till 90% takes time. पता नहीं last 10% you're waiting. कि इतना slow buffer हो रहा है. क्योंकि that last 10% takes another 100% of energy. Are you willing to put another? छोड़ो यार, दबे तो मिल गया अब क्या और क्या चाहिए? Push. What's the point of living otherwise? Superb. I will remember this. Thank you so much, sir. Lovely talking to you. Pleasure. Thank you.